Automation is an emotion. Automation is not a technical thing, it's an emotion. Once you develop that emotion, then you'll be able to automate, not with some tactics and tricks. ऐसे ही motivation is also an emotion, not a tactic or trick कि हमने ये किया और motivated हो गए, right? Let's understand now what is motivation, right? So the first thing we understand is that a business owner creates an aura, a team members enters into that aura, and depending on this aura, either he will have a motivation or he will not have a motivation. What basically happens is always a transition. They when come are very motivated कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, मैं कुछ फोड़ने वाला हूँ, सब करने वाला हूँ, and then slowly वो medium होता है, negative होता है, फिर super negative होता है, वो छोड़ के चले जाता है. Yes, no. The reason that happens is because he comes with a positive excitement because he is not part of the aura yet. अगर आपके ट्रांजिशन होता है कि बंदा आता है सुपर पॉजिटिव काम करने के लिए रेडी और नेगेटिव साइड पे जाता है धीरे 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 करके एंड दे फाइंड लाइन इन द नेगेटिव जोन एंड लीव, that simply means that your aura is wrong because he came with the right intent, but then the culture and the aura and the energy in your company made the intent go down and that's why he went to negative side. कितने लोगों को realize हुआ by raise of hands कि आपके साथ ऐसा होता है? Yes. Now if this is happening again and again in your company, is this a good thing to happen? Yes, no. No, because you can't build a team that you want, right? The one thing that you need to understand is to train your team. Let me explain what happens. Basically, when you build a company, your company grows in a pyramid format. You as a business owner start from the bottom, and when you're on the bottom, you do the most stupid task that you can do, which is cold calling, cold emailing, organic lead generation, posting content, running ads, doing sales calls, doing webinars, whatever you call it. So you do a lot of tasks over here, which is the most basic form of work that you can do to build a company. Yes, everyone does that. जैसे ही हम ये करते हैं तो हम इवॉल्व हो जाते हैं. हम बोलते हैं अब ये सब नहीं करना. Now I will automate. Now I will delegate. Now I will lead. जैसे ये हो जाता है आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो. अब बोलते हो now I'll not do that. I'll have time, the space. Then you go, oh I'll not do that. I'll just brainstorm on ideas. Then when that happens, you go next, and basically you evolve as a business owner with time. Yes, that happens. Yes, no. What you were 2 years before, are you the same person right now? Yes, no. No, right? The reason that is that because you evolved as a person. So what you are going to is two things. Number one, you are becoming more creative in your work, and number two, your complexity of the work is increasing. The second thing that is happening is complexity. So you are becoming more creative with your work and the complexity of your work is increasing. यानी कि आज आप भले 3 घंटे दिन में काम करते हो पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है. For example, if I'm sitting on an offer and making it better, it's a very complex work. भले 2 घंटा लगेगा, पर वो 2 घंटे पे इतनी एनर्जी डाउन हो जाएगी कि मैं 12 घंटे काम ही नहीं कर पाऊंगा because my brain will be fogged. Yes, no. Yes. जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स साइड पे जाता हूँ, काम क्रिएटिव भी होता जाता है, राइट? पहले मेरा काम होगा, जैसे अगर मैं लेट्स से पॉडकास्टिंग फॉर्म के अंदर हूँ, तो सबसे पहला काम है मेरा कि आई एम एडिटिंग वीडियोस और ट्रिमिंग वीडियोस. सेकंड काम है मेरा थंबनेल्स बना रहा हूँ. थर्ड काम है मेरा यूट्यूब संभाल रहा हूँ. देख लो क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. फोर्थ काम होगा मेरा कि मैं टीम हैंडल कर रहा हूँ पूरी एडिटर्स की और डिजाइनर्स की. फिफ्थ काम होगा मेरा खुद पॉडकास्ट दे रहा हूँ. Does that make sense? अभी आपके बिजनेस भी क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्सिटी का एक बहुत टेक्निकल टास्क है. क्या हो सकता है वो वेबिनार बनाना, फनल लॉन्च करना, ऑफर को बेटर करना, एड्स के आइडिया सोचना. बट द प्रॉब्लम इज यू बिजनेस ओनर्स कीप ऑन स्टक ऑन द सेम लेवल. हम यहाँ पे क्यों रहते हैं? इज बिकॉज the complexity of the task over here is not delegated to someone else. यानी कि आप एक बंदा नहीं ढूंढ पाए जो उस लेवल की complexity और creativity को समझ पाए. तो आप एक बंदा लाते हो, उसको बोलते हो भाई सुन हमें ऑफर ठीक करना होता है. बोलता अच्छा बढ़िया सिखाओ मेरे को. Now since you have not decoded into a particular science, you cannot teach the person. आप उसको सिखा नहीं पाते हो तो आप यहाँ रह जाते हो, बाकी प्रोटेक्ट करता है, बोलता कुछ हो नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ. That's why it is very very crucial to whatever you have in your conscious mind to put it into paper and put it into step by step sequence so that you can teach it to someone else.